Sir, shall we start? Sir, yes. Okay. So, good evening, all participants. I again welcome you all on our second day of our AICT approved FDP. I again welcome our today's speaker, Mr. Rocky Jagtiani. Sir is going to conduct sessions, okay, every afternoon session with hands-on. Okay, so I again welcome our today's speaker, Mr. Rocky Jagtiani. Over to you, Rocky sir. Yeah, thank you, Pramodji. Thank you. Right. So, a moment before we start the session, I think Dr. Pushpa is requesting for the yesterday's second notebook. So, kindly, from one of the coordinating committee members, could you just reshare the yesterday's second notebook, the link for second notebook? Actually, whatever you have shared first, in that some code was missing and I was unable to get on. We yesterday discussed that I have not defined training features, if at all you remember. So I was stuck in that. We have to code it in the class, right? The code is not missing. Yeah, The code is we have deliberately coded in the left class, behind. but somewhere I have missed that point and I was unable to get. So I thought I was stuck over there only. Right, not a problem. So at least follow and do you have the video recordings of this session, of the previous session, yesterday's session? I believe you have, right? Yes, I have. Right. So if you just watch that part of 3 or 4 minutes of that particular session, which you have missed out, and that's it. You're Yeah, good. Good to go. Today was busy So, in the morning session and didn't right. got time to No just go problem. on. So Yeah. maybe you will be a little left behind because of the next half an hour, 45 minutes. We will not be able to cope up with us because you have missed something, but then make sure you are able to cope it up after the session. Yes, sir. Right. Yeah, Okay. thank you. Right. So, friends, let's start with the session. Let me share my screen in a minute. Okay, right. So, a quick acknowledgement from my participating friends. Is the screen visible clearly? Okay, thanks, Indrajit. It's a quick response. Right. Now, friends, moving on to back to this ML pipeline notebook. Please remember, once you open a Colab notebook, you have to run all the cells up till that point. Otherwise, you won't be able to run any further. So let me give a quick recall of what we did yesterday, from which point we need to start running. So the first thing was you uploaded your file. You have to upload it today also because you closed your Colab notebook, right? So Google releases your space. So from google.colab import files, please run this code. You already have the file of studentrecords.csv on your local system, on your local machine. You downloaded yesterday. Please remember from the Google Drive link. So just run this 2 lines of code, google.colab import files, and upload your file into your Colab. Next, read the CSV file into the data frame, and you should be able to see this kind of an output. Okay, so moment you have loaded the data and you can see the entire data frame of student records having about 8 records, please say me a yes on the chat so that we all are going in sync. Okay, Bhuma Devi says yes, Indrajit says yes, waiting for others. Come on, friends. Pramod said yes.
Smita says yes. Okay, I'm still waiting for a few more responses. Because without loading data, we can't move on. Okay, so I can see a few more yeses coming. Okay, please, anyone who's left out to be loading data, please move on fast because without which we can't move, right? So after you loaded the data and you have done a DF, आपको पूरा data frame दिख रहा होगा आपके, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, वैसे आपको आपका data frame दिख रहा होगा. Next step is we have to run this particular cell in which we were separating, keeping the 4 columns which were X, meaning to say the input features, and the column called recommend, which is the output feature, which is Y. So we separated X and Y. I'll run this cell. Now it's going to be very quick. Now running every cell is just going to be shift enter, but और कुछ नहीं करना है आपको, or you can press the run button which is given beside. Yeah, this is where I have missed it, sir. Yeah, I was unable to get this code. Now I remember, recalled. This is what I missed in the code. I'm punching the code so that you are with the class. And I've punched the code, Pushpa, and I hope now you're along with all of us. I punched the code on the chat. Please pick it up quickly from it and run it. Right. So you have separated the data, the 4 columns here, which is your X variable. The mistake which 99% people make is they misspell the column names. It's very obvious. If you misspell the column names, it's not going to work. Right? So आपको बहुत careful रहना है. यहाँ column names को spell करें. Other way around, better. I never type the column names. I go up here and I copy and paste the column names. That's what I do. That's the best way of doing it. I copy it, Control C, and wherever you want to go, you can go and paste it. Let's see, you want to go and paste it, so you can paste it here. That's it. Now I can do little formatting, like putting comma in between and all that stuff. Okay. So avoid typing the column names, kind of copy and paste it there. Okay. So once you have taken these column names from the data frame, dumped into training features, the recommend column dumped into the outcome labels, you have your X and Y separate. So X is these 4 parameters and Y is the outcome target variable recommend. Right, now what am I doing? Some people I remember yesterday mentioning to me that they missed out. They missed out on this particular part. They forgot to the cell. So this cell is separating, or rather I'm making 2 lists over here. My first list is numeric feature names in which you have the square brackets. Within the square brackets, that's the way you make a list. So I made a list in which I have kept research score and project score. I've kept 2 column names, research score and project score. Second, categorical feature names, I have kept 2 column names, overall grade and obedient. Okay, right? So I'll run the cell. I've run it. 2 variables have got created. The first variable holds numeric column names, second variable holds categorical column names. Then what we did next was feature scaling. Okay, so I hope everyone is going along with me. They're also running their cells slow and gradual and recalling what we did yesterday. So now what we are doing here is I'm importing something called as a standard scalar. Purpose of scaling we have seen yesterday, so no discussion on that. We made an object of standard scalar here, and we told the standard scalar to fit over the numeric data, because we can only do scaling of numeric data. We can't do scaling of categorical data, not possible. Okay? So when we scale the numeric data, what it means is हम numeric data का mean, that is mu, and standard deviation find कर रहे हैं.
What it means is, just a second, let's put the symbols here. What it means is we are finding the mean and the standard deviation. Once we know the mean and the standard deviation for any particular column of ours, let's say X, then we go to that particular column, we pick up the value, let's say Xi, any particular value, we subtract the mean from it, and we divide it by the standard deviation. This is the way you scale every value in standard scalar. But who is doing the scaling? When do you do scaling? So standard scalar has two methods. One is a fit function, or rather all scalars have two functions only, two methods. One is fit, other is transform. So friends, when you go ahead with fit, what you are doing exactly is you are finding what is the mean and the standard deviation values. And when you go on with transform, you are actually applying this formula to transform the value xi to a scaled value of xi. If you remember yesterday's work, you can see it right away also here. After I run my this cell, I can notice the person who got the highest highest research score has been normalized or scaled to 0.96, and the person who got the least research score has been normalized or scaled to minus 1.8. You can notice the person at the index 2 has got the least score, therefore it is minus 1.8. The person in index 5 has got the highest score, therefore it is 0.96. Okay, I hope you have reached till this point. All people who reached till this point, please say me a yes on the chat. Okay, very nice. चलिए अब एक कदम और आगे बढ़े. So what we did next yesterday was that we realized okay, Apeksha has a query here. Can you repeat when to use standard scalar, min max scalar and robust scalar? Yes, Apeksha, I will do that. Apeksha, I'll do that. Just uh, give me a couple of minutes. Right, so get dummies is a method by which we convert our categorical data into numeric data, right? So this is used for doing one-hot encoding, which we have learned yesterday. So I just run this particular cell. When I run this cell, what I notice is that my single column called overall grade got split into 5 columns, because under overall grade there were 5 different types of grades. So I've got overall grade A. So all those students, let's say the 0th student has gotten grade A. Therefore, for the 0th student, or rather for the 0th row, the overall grade A is 1, but every other column of grade would be holding a 0. You can notice. Okay, the 0th student is obedient, so his obedient value is yes. Therefore, the column obedient n is holding 0 and obedient y is holding 1. Okay, so in short, every value is getting converted into binary form. It's getting converted into a binary vector. Okay, fine. Yes. So till this point, how many of you have got your data ready up till this point? Okay, research score, project score scaled है, ओवरऑल ग्रेड ए से लेकर ओवरऑल ग्रेड एफ तक है, मतलब वन नॉट एनकोड हो चुका है. ओबीडियंट नो, ओबीडियंट यस, मतलब ओबीडियंट कॉलम भी वन नॉट एनकोड हो चुका है. यहाँ तक कितने लोगों का आ गया वो प्लीज यस करें मुझे ऑन. Vasmita says this one I did not get. So are you trying to say, Vasmita, that you not got this particular output of one not encoding? Like, is it some error in the code missing? So if that is the case, if it's an error in the code missing, I will punch this code for you. See if that helps.
I'm punching this code. There is no enter between. People are looking at my screen. They're saying कि enter press किया रहेगा. Enter नहीं press किया मैंने. There is no enter. Keep that in one single column only. That's because of the space management. I'm shrinking my screen, fitting this and वो नीचे आ जाता है. But this is one single line में. There is no enter here. Okay, I'm holding. All people who says not got the output, please watch my screen carefully. I have also punched this code. बाकी खाली आपको इतना करना है. Print training features. Come on, do it. How will you solve the assignment or case study if you're not able to catch up with this kind of coding? Case study तो बहुत मुश्किल है इससे. So people who have said not got the output or trying, please, I'm waiting for your confirmation. Okay. Now I see majority people have said yes, done. Okay. Now let me first solve Apeksha's query before I move any further for today's work. Okay. Now let me fix the agenda for today first. Let me fix the agenda. I didn't fix the agenda because we were trying to recover what all we did yesterday. Agenda for today is we are going to finish with this notebook, which is going to give us a taste of how a machine learning problem is solved. Trust me, these are the basic steps. However complex the problem is, however complex the data set is, you will always keep doing these steps, which we are doing right now. There could be some more steps added, but इससे कम नहीं होगा. Steps will be definitely added, but it will not get reduced. This is the first thing. Second is, having said this, that we are having our this particular notebook. This notebook should get over, according to my calculation, by 5:45, 5:50 at the most. Before 6 o'clock. I repeat, before 6. Or by all means, we are going to start with our next notebook, train and test split. I have not shared the link of this yet, but we will be sharing very shortly. Okay, once we come to this notebook, I'll be sharing it on the chat. Okay, so this is going to teach us of why we should split the data to train and test set and how to do it, and then take another case study problem here in which I've got two problems. One is a linear regression, a simple linear regression with one x and one y, and then we are going to take a linear regression problem with multiple x values and one y value. So we're going to take a single variable linear regression problem and a multi-variable linear regression problem, and we are going to solve it. Okay, completely from start to end. This was what is the work. In this case, we'll be shifting the multi-variable linear regression problem for tomorrow, but we'll be trying to solve, or we will definitely solve, the single variable wala problem today. Okay, this is what the target is. Right now, and as you go on, no, you'll become faster and faster. Okay, now coming on to Apeksha's query. Now, friends, we are having three types of scalars, right? Standard scalar, min-max scalar, and robust scalar. Now, the fundamental is this. If you don't have outliers, then, or maybe very few outliers, then you are free to use min-max scaling or standard scaling. Either you can use, either one of them. If you have outliers, then don't think of using anything else. Please use robust scaling
only. As regards the min-max scaling, the funda is that whatever value x you have, you will subtract from it the min of the respective column, and you will divide by the range, and all of us know range is max minus min, isn't it? And Zigzag standard scalar, अब तो आपको याद ही पड़ चुका होगा, मैं लिखूँ ना लिखूँ, I know you know the formula already. It is xi minus the mean value divided by the standard deviation. Okay, what about robust scalar? Robust scalar is also equally simple. It takes every value of x, subtracts from it the mean of the respective column, and divides it by the IQR. IQR stands for interquartile range. Okay, so that's the basic funda. I'm again repeating, अगर आपके डेटाबेस में डेटा सेट में आउटलायर्स है तो सॉरी आउटलायर्स नहीं है तो आप मिन मैक्स स्केलर या स्टैंडर्ड स्केलर कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं. इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस. लेकिन अगर आपके डेटा सेट में आउटलायर्स है तो आपने इन दोनों को यूज नहीं करना, आपने रोबस्ट स्केलर ही यूज करना है. Okay, right? So I hope this is going clear to each one of you. I would humbly request you that in my lectures, because I do a lot of whiteboard writing, I'm very sure I've heard some very senior eminent personalities speaking in the morning in the FDP1 as well as in the FDP2. I'm sure while they are also writing, at least if I want to listen to some particular part, and just log in for about half an hour, listen to that particular part and log out for my own personal knowledge gain, then I always keep a writing pad with me. Always. So I still have a writing pad with me on my right side with a pencil. So if somebody's writing something, I just roughly jot it down, so that I have that in my records. Because I really cannot type this formula on the chat and give it. How do I give you this thing? Right? So Apeksha, I hope it's going clear. Please acknowledge a yes. Okay, cool. Thanks. You've done it right. So now, friends, अब आज के कदम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. अब जरा इसके बारे में सोचिए. आपने ट्रेनिंग फीचर्स जो अब आपके हाथ में आया है, जो ट्रेनिंग फीचर्स आपके हाथ में अब आया है, उसके अंदर 9 कॉलम्स हैं. यू डोंट बिलीव इट? चलो हैव अ लुक. देयर आर 9 कॉलम्स. 1 2 1 2 3 3 4 5 6 7 8 and 9. You've got all 9 columns. You originally had 4 columns, please remember. You originally had 4 columns, 2 numeric and 2 categorical. Overall grade and obedient, right? So 4 became 9 columns, right? That's okay. That's okay, absolutely. But then can I separate from, so what I'm doing is that I'm doing training features dot columns. Training features dot columns is going to give me the names of the 9 columns. I repeat, it's going to give me the names of the 9 columns. Yes, because I want to do some kind of arithmetic operation between the column names. The names of the columns में आप arithmetic operation नहीं कर सकते. So I had to convert this into a set. And the advantage of converting into a set is also that if I have any repeat column name, data frame can have a repeat column name, no? So that would be removed. But the objective here was not to remove duplicate, because I know मेरे डेटा फ्रेम में कोई रिपीट कॉलम नेम नहीं है, लेकिन मुझे ये अर्थमेटिक करना था बिटवीन द ट्रेनिंग फीचर्स डॉट कॉलम्स एंड द न्यूमेरिक फीचर नेम. इसके लिए मैंने उनको सेट में कन्वर्ट किया. ठीक है. सो इट्स certain syntactical requirement of converting it into a set. Okay, now I've got 9 columns here. दोस्तों आप सबको पता है कि न्यूमेरिक फीचर नेम्स में आपके पास 2 कॉलम्स हैं, एक्जेक्टली 2 कॉलम्स, राइट? सो 9 minus 2 is 7. मतलब जो 7 कॉलम जनरेट हुए हैं, दोस आर कैटेगोरिकल इंजीनियर्ड फीचर्स. फीचर इंजीनियरिंग करने का आउटकम क्या निकला? फीचर इंजीनियरिंग करने का आउटकम ये निकला कि हमारे पास 7, 1 2 नहीं, 7 कैटेगोरिकली इंजीनियर्ड फीचर्स आए हैं, और वो ये है. लेट मी रन दिस सेल. ओवरऑल ग्रेड बी, obedient N, overall grade C, obedient Y, overall grade A, F and E. Okay, right. So is this code there? Anybody can acknowledge, is this code there, or should I punch it on the group? Okay, code is not there. Yeah, here comes your code, friends. I punch it on the group because I know while viewing and typing you may make a mistake.
So how many of my friends got the categorical engineered features printed on their screens? Say me a yes. School Apeksha, you got it first. Very nice. Good, Indrajit. That's good going. Fantastic. Okay. That's quite a few people who have got it. Good, good. Right. Now, I remember we spoke yesterday that when I'm talking of supervised ML models, we can do two things. Second, we can do classification. So I have a very quick question for the class. I have a very quick question for all of you. All of you. So please keep your fingers on the keyboard ready to answer this. When I'm talking of supervised ML model, I can do two things. One is prediction and one is classification. For prediction, what do I use? Classification, what do I use? For Please do prediction, the yes, regression. very good. For classification, we use logistic regression. No, Right, or classify. In other words, a simple word, classify. classify. Correct, very good. So as very correctly said by one of our friends is, for prediction, we are going to use regression algorithms, and for classification, we are going to use classifiers. So there are a lot of classifiers available in supervised ML, and a lot of regressors also available. Friends, the simplest regression algorithm, in which we can actually go however deep we want to, like we could go for hyperparameter optimization. We could learn each and every parameter of it. Of course, we are not doing that because on hands-on, because that is being done in the morning. You know, in the morning session, you are being taught that a linear regression problem has so and so parameters. For example, in a linear regression, I'll talk about it. Give me a couple of minutes. Okay, so linear regression is one of the simplest regression algorithms and most widely used. People have this wrong impression कि अगर ML algo simple होगा तो वो अच्छा output नहीं देगा. Let me go in for a more complex problem. Sorry, a more complex algorithm. You know, it's very common myth, no, that if I buy an expensive phone, only then it's going to give me a functionality. But when you buy an expensive phone, you realize that, oh my God, 99% तो you're only receiving calls and making calls and checking WhatsApp. वो तो आप एक थोड़ा low end phone से भी कर सकते थे, right? So it's same thing here. So a linear regression algorithm is most commonly used, to be very honest, in solving big problems. And in linear regression algorithm, you have two varieties. You could have a single variable. That means you have a single x which helps you to predict y, or you could have a multivariable case where you have nx parameters, to predict one y parameter for you. I repeat, you have nx parameters from x1 to xn to predict the y parameter. Remember, the semicolon here separates the two set. Now, the point is this. So linear regression, two varieties: single variable, multivariable. Okay, what about classifier? Friends, there are a lot of classifiers available. The simplest of all the classifiers is called as a logistic regression. People have this point of doubt here. How can a logistic regression be a classification? Don't get carried away with the name. The fundamental aspect here is that this classifier is actually finding the best separating line. If you remember yesterday's session, what we spoke about was in regression, what we do is, if we have some scatter plot, we find the best fit line, right? We find the best fit line. Let's say that we have some points here. So what do we do in regression is, we actually find the best fit line, but in the case of logistic regression, we also find the best, not the fit line, the best separating line, which means that you are able to classify the points
into two classes. You can listen, this is particular, let's say class 1 above, and the points coming below the line are, let's say, class 2. So that's your class 1 and your class 2. Okay, right? So I hope you're getting. Ultimately objective आपका एक ही है दोस्त, आपको best line find करना है. Either you use it for separating the 2 points, or you find the best fit line which comes as close as possible to the 2 lines. अब यहाँ पर क्राइटेरिया उल्टा हो जाता है, मतलब बेस्ट फिट लाइन जो है, बेस्ट फिट लाइन जो है वो ये इंश्योर करता है कि वो कितना क्लोज है हर लाइन को. इसके लिए भी यूज बेस्ट फिट लाइन के लिए इक्वेशन ऑफ LSE. या लॉस फंक्शन इज LSE, लीस्ट स्क्वायर्ड एरर, because in the best fit line we want the line to be as close as possible to every point available in the data set. But in the case of best separating line, get this fundamental thing very clear. This is applicable to all. You will never go wrong. Trust me. Any classifier, this is a basic fundamental. Best separating line, you are more interested to find not the least square error. You are more interested to find the maximum squared error with respect to the class, not with respect to the point. What do I mean to say? I mean to say this, that if I have two classes, as you could see here, then I am interested to find this, let's say class 2 and this is class 1. So I'm interested to find actually a line which is far away from the class 1 as well as far away from the class 2. So I want some line which is away from both. This line shouldn't be close. This line should be away from both, but you have to balance it. So you'll obviously find some intermediate point where you're able to get an average where you're equally away from both. You're equally away from both. If you're equally away from both the classes, that's it. You're acting like a divider on the road. So this is like a divider on the road, and you have been able to separate both the roads or both the classes. That's a funda of basic best separating line. Okay. Now, internally logistic regression does this particular work of best fit, best separating line, and linear regression does the work of best fit line. Right. Now, I know अब जो कुछ मैं बोलने वाला हूँ, that's going to be a little overdose for people who are not from computers background. I know that, but at least listen, because you have the video recording, and you're going to listen possibly this, maybe today you would have listened it from 10 to 1, or maybe you're going to listen it tomorrow also once again. But you also have my video recording, right? So you can always refer it back when you're learning. Now, friends, when you're talking about linear regression, we always find the best fit line. Now, what happens is, suppose if I tell that there are only 2 points which I have given you in the data set. Suppose, imagine this situation. Suppose if I only given you 2 points in the data set. So is your line going to be just a best fit line? I don't think so. Your line is going to be a super best fit line. Super, because you're going to pass the 2 points. दोस्तों, अगर आपके पास 25 पॉइंट्स होते तो हम मेहनत भी करते टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन. लेकिन अगर आपके पास 2 ही पॉइंट्स हैं, आप बोलोगे 2 पॉइंट्स जैसे हो गए, ट्रेनिंग डेटा सेट में तो बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है ना? इमेजिन कीजिए ना, कंसीडर द सुपर आइडियल केस नो, that if you have just 2 points, then that 2 points is going to be, or maybe you have many points which are coming in a straight line, then you will be able to generate a line which actually passes those points, है ना? So इसका मतलब ये हो गया कि जो डेटा यूज हो रहा था ट्रेन करने के लिए, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से, जो डेटा यूज हो रहा है ट्रेन करने के लिए आपके ML algo को, वो तो 0 एरर जनरेट कर रहा है. मतलब this line is passing both the points 1 and 2. There is 0 error. एरर नाम का तो चीज ही नहीं है. हाँ, ये बात तो सही है, करेक्ट. लेकिन जब ऐसे मॉडल को रियल लाइफ में हमने ट्राई किया, और ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं, शायद बहुत छोटा होगा फॉन्ट, ठीक है, वापस दिखाता हूँ. ये जो ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए ये रियल डेटा था, अनसीन रियल डेटा था, तो हमने रियलाइज किया कि काफी एरर आ रहा था. वी गॉट लॉट ऑफ एरर. दैट मीन्स when we give these green points, we saw a lot of error coming. So there is something called as, I repeat, there is something called as penalty. We can give a penalty. So penalty का मतलब जब
कोई बहुत बहुत स्वीट बहुत अच्छा होता है ना, तो दाल में कुछ काला है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब आपसे कोई बहुत स्वीट चल रहा है तो उसको कुछ काम होगा आपसे, भैया ये तुम्हारा दुनिया का रिवाज है, व्हाई इज बिकम सो स्वीट ऑल ऑफ अ सडन, सो व्हाई इज दिस रिग्रेशन लाइन पासिंग माय both the points? So he's giving me zero error in this situation. So he seems to be super idle or super fit line. No, no, no. There's nothing as super fit line. There can only be a best fit line. There can't be super best fit line. So add a penalty to it. You add a penalty to it. And when you add a penalty to it, so we can have a ridge linear regression, or we can have a lasso linear regression. Or rather, we can also say linear regression with ridge regularization, linear regression with lasso regularization. So I didn't include all this stuff in my notebooks. These are all very simple things to be included. Just one line code and I could get the output in ridge or lasso. But the problem is that coding for linear regression and adding a penalty of ridge or lasso is not a big deal. That is one line code. It is one or two lines code. That's it. In one or two line cells add करना है. लेकिन इसका concept समझना ज़्यादा important है. Concept आपको समझेगा नहीं तो कोई use नहीं code का. There is no use. So linear regression with ridge regularization. Ridge, R-I, ridge is spelled as R-I-D-G-E, regularization. Okay. Other is linear regression with lasso. Lasso is spelled as L-A-S-S-O, lasso regularization. Okay. Now, basic funda is this. If your line is passing to all the points, do one simple thing. See, when the line passes through all the points, no, this situation comes where, or rather, sorry, this situation comes, no, this is an ideal situation, hypothetical situation rather. In this situation, what happens is we say that the bias, I repeat, the bias in this particular case is high and the variance is low. Try to, the bias is in this particular case is high because you are passing to both the points. Now I will not be going too much into bias and variance right now because I think that's going to confuse all of you. So let me avoid these two terms for a few minutes. Let me just tell that ये जो idle line है ना, इसको थोड़ा सा आप shift करो, मतलब let it not pass through both the points. So in that situation, if I make a line which doesn't passes through both of the points, then you will say, "Arey, this is not idle line." Correct, this is not idle line. I agree. But this non-idle line is giving us a lesser error with respect to the green test points on which I tested my system. Ah, that's interesting. Exactly. So what I'm trying to say is that instead of having this super idle line, try to deviate from the super idle line, have a less idle line. So don't have a super fit line always, don't have a best fit line always, have a less best fit. But this is not a best fit, this is a little less than the best fit line, but this is giving in realistic sense to me lesser error with respect to my test points. That is what the penalty is. The only thing is आप penalty कैसे add करते हो उसका एक formula है. In the case of ridge, don't worry about the formula friends and don't get disheartened. अरे यार ये formula तो मुझे अभी समझ में नहीं आया. Please don't get disheartened, just listen to it. If you wouldn't forget it, no problems. Okay, so we basically in linear regression always find least square error, right? Plus we add a penalty. So there is a value called lambda, which is basically a constant which Ridge defines. So lambda into slope square. Slope मतलब line का जो slope है, जो line का slope है वो उसका square. So least square error plus lambda into slope square is the calculation for linear regression with ridge regularization. And in the case of linear regression with lasso regularization, we use the least square error. वो तो least square error तो bread and butter है ना linear regression के लिए. Into lambda into absolute value of the slope.
into absolute value of the slope. अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब हमें कैलकुलेट करना है क्या? नहीं दोस्तों, आपको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना, ये सारी चीजें रेडीमेड है। बस खाली हमको रेगुलराइजेशन पैरामीटर, अगर हमने लीनियर रिग्रेशन का algo बनाते समय उसको रेगुलराइजेशन पैरामीटर दे दिया, जो मैंने अभी नहीं किया है, प्लीज डोंट वरी। बट अगर एक्चुअली हमने प्रिपेयर इतना कुछ किया हुआ है कि वो टाइम मिलेगा नहीं हमें करने के लिए, कॉन्सेप्चुअली हम जा सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन रेगुलराइजेशन, अगर आपने यहाँ पर मुझे लैसो पैरामीटर दे दिया तो वो क्या करेगा, वो क्या करने वाला है कि लैसो रेगुलराइजेशन ऐड करेगा। मतलब जब आप लिखते हो रेगुलराइजेशन इक्वल टू लैसो, होता क्या है, होता ये है, इट फाइंड्स द बेस्ट वैल्यू फॉर लैम्डा एंड देन मल्टीप्लाइज विथ इनटू स्लोप। ऑन द अदर हैंड बाय डिफॉल्ट लैम्डा इज 1 बाय द वे। एंड लीनियर रिग्रेशन में अगर आपने रेगुलराइजेशन पैरामीटर को अगर आपने रिच दे दिया तो वो लैम्डा इंटू स्लोप स्क्वायर करेगा। ठीक है, अगर आप में से कोई ऑलरेडी एमएल यूज कर रहा हो तो आई एम क्वाइट श्योर आप में से कोई ना कोई मुझे चैट पर सजेशन देगा कि रॉकी जी रेगुलराइजेशन इलास्टिक नेट भी है। बिल्कुल है, कौन ना कह रहा है, बट इलास्टिक नेट इज आफ्टर ऑल काइंड ऑफ एन amalgamation. इलास्टिक नेट, आई रिपीट, इज amalgamation, इज अ कॉम्बिनेशन, चटनी है वो दो चीजों की, एक है लैसो, एक है रिज। तो अल्टीमेटली लैसो और रिज अगर आपको क्लियर है तो आपको और कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट, right. So I hope this brief introduction about linear regression went clear. So linear regression works like this. There is no penalty business. There is no penalty business in logistic regression. Yes, you can give penalty. ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आप रिज और lasso अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली नहीं करते। Okay, in case of logistic regression, right? Okay, so I hope this is clear. At least what you heard is clear. Please tell me a yes or a no. Ask me your questions. Please ask me your questions. Throw me your questions. Come on. Okay. So I've got a question from my friend Indraji. Is best separating line done to avoid misfit of data? No, Indrajit, the best fit line is the one which is separating the data. So he's a kind of a partition between the two, right? Because effectively, if I have a best separating line, I have this one class of data above and one class of data below, right? So he's acting as a separator between the two. And Indraji, there is no misfit kind of thing. There is a term in machine learning called as an overfit, and there's an underfit. So think about this, Indraji. Suppose if I give you some points like this, I hope Indraji you're able to see these points, which I know they are too light. Are you on my screen? No? Okay, no problem. Now you cannot refuse. Now I'm sure you can see them. Right? So if I have these scattered points, instead of having a straight line, if I have a Swiggy line, Swiggy जो हमारा ऐप है, Swiggy line. Swiggy is a technical word in mathematics which says that you're like सुई धागा कैसे जाता है ना, सुई धागा वैसे जा रहा है. So if you are able to go like a सुई धागा or a Swiggy line, then this is called as an overfit, because आपने एक ऐसा non linear इक्वेशन फाइंड किया है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड किया है जो ट्रेनिंग पॉइंट्स के हर एक पॉइंट को, जो ट्रेनिंग सेट के हर एक पॉइंट को क्रॉस करता है. इस केस में सिचुएशन क्या होगी कि अगर आपको एक स्विगी लाइन है ऐसे, तो आप जब इस मॉडल को, इस लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को यूज करोगे to predict some data, let's say you give him some point here that मेरे पास ये x है तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो वो बोलेगा कि x का ये वैल्यू होगा, लेकिन एक्चुअली सच्चाई में उस x की y की वैल्यू ये होगी ही नहीं, शायद उसकी x की वैल्यू ये हो, तो एरर काफी ज्यादा आता है. So because overfit to the training data set, when you do the test data set you get large errors. So this is called overfit problem. And underfit would be like this, that you are having your points the way they are right now on the screen, and you are not bothered at all about कि वो points किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ botheration ही नहीं है आपको. आपने एक लाइन उठाकर
बना दी। ये कहाँ फिट हो रहा है इन पॉइंट्स को, भगवान जाने कहाँ फिट हो रहा है ये। तो ये फिट क्योंकि नहीं हो रहा, दिस इज अ केस ऑफ अंडर फिट, अगेन यू आर गोइंग टू गेट वेरी बैड रिजल्ट्स। सो व्हेन यू आर एबल टू गेट द right line which goes whether it's straight line or a non-linear line, that is okay. So you could have a non-linear line like this also, no? Something like this. This is still better, it is at least not overfitting the points. Okay, right? Okay, Pallavi has this question. What value of penalty term is used? Pallavi, we really cannot suggest the value of lambda. The lambda value is actually found by a mechanism called grid search CV. Okay, so that helps you to find the best value of lambda. But when you're doing a trial and error, then you could actually use a for loop and just make multiple models and increment the lambda value in increments of 1 to check which gives you the best value. There is no formula to get the best value of lambda, is what I'm trying to say, Pallavi and Vishali. Indrajit has the next question. Overfit and underfoot concept understood. Okay, cool. Fine. So friends, with this note, let me jump back into the practical part. Okay, right. So you had this light moment of listening to some theory concepts. Let's apply them here. Come on, everyone. So friends, logistic regression हम क्यों import कर रहे हैं आपको पता है, क्योंकि हमें यहाँ classification करना है, हमें फाइंड करना है कौन से स्टूडेंट रिकमेंड हुए हैं अपने पीएचडी ग्रांट के लिए और कौन से नहीं हुए हैं. सो आई एम इंपोर्टिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन. I made an object of it. Every ML, remember, every ML problem, however difficult it is, you will follow these standard steps. You will first pick the object of the class. Notice कीजिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैंने कोई भी हाइपर पैरामीटर्स अपने तरफ से नहीं दिए हैं. जब आप कोई भी ML का ऑब्जेक्ट बनाते हो और कोई पैरामीटर पास नहीं करते तो इसका मतलब होता है कि जो इसके डिफॉल्ट बेस्ट पैरामीटर्स हैं आप वही यूज करना चाहते हैं. दिस मीन्स जो इसके डिफॉल्ट बेस्ट पैरामीटर्स हैं वही आप यूज करना चाहते हो. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वर्क्स बेस्ट, ट्रस्ट मी. लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट, फिट का मतलब एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, ML मॉडल इज सो उसको अगर आप अपने बच्चे को कोई एग्जाम दिलवाना चाहते हो तो पहले आप उसको नोट्स दोगे ना. You will give him some guide, you will give some test books, you will give him some notes to study ना, कि ये सिलेबस है, ये पढ़ाई कर लो, फिर आपका भैया आपका अगले हफ्ते एग्जाम है. तो सेम तरीके से जो आप बनाए हैं आपका बच्चा है, आप किया आपने मीनिंग अंडरस्कोर फीचर्स, आपके फीचर्स है इसके अंदर 9 कॉलम्स है आपके पास, 2 न्यूमेरिक और 7 कैटेगोरिकल फीचर्ड कॉलम्स. आउटकम अंडरस्कोर लेबल्स, ये आपका वेरिएबल y है, तो यू हैव गिवन हिम x, यू हैव गिवन हिम y. दैट शुड क्लिक इन योर माइंड. जब आप किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल को फिट करते समय x और y दोनों दोगे तो इसका मतलब ये हो गया सुपरवाइज्ड एल्गोरिथम. सिंपल, राइट? सो ही गॉट द x, ही गॉट द y. इसने पढ़ाई कर ली, बच्चा है, पढ़ाई कर ली, ऐसा सवाल आएगा तो ये आंसर देना है, ऐसा सवाल आएगा तो वैसा आंसर देना है, वगैरह वगैरह. तो इसने डेटा को समझ लिया and the model is ready. Now, because the model is ready, it can be used to predict some real data. If you feel that I want to print the model, you can write model and you can like kind of print it. See, model which got printed, and this model is having so many parameters. Trust me, 99%. I repeat my words, 99%. We don't touch upon these until unless, I repeat my words, until and unless we have fixed ourselves कि हाँ यही एल्गोरिथम मेरे लिए बेस्ट है. भाई मैंने 4 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ट्राई कर लिए क्लासिफिकेशन के लिए, उसमें से लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे मान लो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, बाकी 3-4 में से सबका बेस्ट परफॉर्मेंस, सपोज इसका LR का आया. अब मुझे इस LR के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और इंप्रूव करना है तो मैं चेंज करना शुरू करूंगा अपने इन पैरामीटर्स को. उसके लिए lot of things are needed. That means lot of domain knowledge,
मतलब अगर अगर मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन के सारे पैरामीटर्स का ही अगर आपको पोस्टमार्टम करना है ना, आपके 3 सेशंस किधर नहीं गए, 2-2 घंटे के 3 सेशंस किधर नहीं गए हमारे। मतलब हम लोग उस पर इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से देख लीजिए, पेनल्टी आपने यहाँ L2 अप्लाई की हुई है, ये डिफॉल्ट पेनल्टी है। L1 इज रिज, L2 इज लैसो। सो पेनल्टी इक्वल टू L2 मतलब लैसो रिग्रेशन अप्लाई किया जा रहा है। इसका मतलब एक डिफॉल्ट लैम्डा की दी गई होगी, इट इज लैम्डा इनटू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्लोप। ओके, राइट। सो इंटरसेप्ट स्केलिंग का मतलब होता है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब बेस्ट सेपरेटिंग लाइन फाइंड कर रहा है, उसका जो इंटरसेप्ट आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1 से। बाय डिफॉल्ट 1 से मल्टीप्लाई, जो इंटरसेप्ट है वैसे का वैसे रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। फिट इंटरसेप्ट ट्रू मतलब इंटरसेप्ट कैलकुलेशन में यूज हो रहा है। जो बेस्ट फिट, जो लाइन आपने मिली ना बेस्ट सेपरेटिंग लाइन, उसकी इक्वेशन में इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट 0 नहीं है, इज देयर। ओके, बाकी तो क्लासमेट नन है, ड्यूल फॉल्स है, उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम आइटरेशन 100 का मतलब ये हुआ। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने, प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर आंसर, प्लीज बी ऑनेस्ट इन योर आंसर, आप में से कितने लोगों ने ओपनिंग वीडियो जो नोटबुक नंबर 1 में दी हुई है उसको वॉच की, और उसके अंदर ग्रेडियंट डिसेंट का टेक्निक बताया गया है? हाउ मेनी पीपल हैव, यू मे नो ग्रेडियंट डिसेंट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। मैंने आपको पूछा जो कल वीडियो थी फर्स्ट नोटबुक की, वो कितने लोगों ने वॉच की है, वो यस कहे। डॉक्टर क्रांति, मिस्टर इंद्रजीत, इन्होंने, मेरे फ्रेंड्स ने यस कहा, वेरी गुड। आई एम श्योर बाकी लोगों ने भी वॉच किया होगा, नहीं किया तो प्लीज कीजिए। आप मेरे नोटबुक्स को अगर पूरी तरह से पढ़ लोगे ना, आपको मशीन लर्निंग का कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, you will know much better than any other portal. What I'm trying to say is, if you watch that video, you would have realized that when the gradient descent technique was explained, it was noticed that to find the best fitting line, we imagined a few lines and then we started moving each line. So let's say that if we had such lines, and if I draw 3 lines in front of you for a given set of points, for a given set of points, then obviously all the 3 lines cannot be the best fit line. तो इसमें से कोई एक बेस्ट फिट लाइन होगा। ऐसे कितने लाइंस आप ट्राई करने वाले? सर वो डिपेंड करता है आप मुझे कितना आइटरेशन अलाउ करोगे। सो इन अ गिवन सैंपल स्पेस, द एल्गोरिथम इज अलाउड टू ट्राई अप टू 100 सच लाइंस टू फाइंड द बेस्ट fit line. Okay, that's here. Simple as that, right? Okay. A number of jobs means, are you going to allow thread programming in between, in behind the scenes? It's on you. So if you see that the job is very complex, the number of jobs equal to none allows thread to be used in the background. Okay. To be very honest, the tolerance equal to 0.0001, it's a little difficult for me to explain at this stage because इसका कुछ background information होना important है जो मैंने अब तक बताया नहीं है। तो if I explain anything of this, it may go bounces to many people and I would end up confusing you. So I don't want to do that right at this moment. Okay. Verbose equal to 0 का मतलब होता है, verbose मतलब जैसे मैं verbose मोड में हूँ अभी, आई एम इन verbose 1, मैं जो जो चीज हाईलाइट कर रहा हूँ उसके बारे में बोल भी रहा हूँ, जो जो कोड टाइप कर रहा हूँ उसके बारे में बोल भी रहा हूँ। सो आई एम इन verbose मोड। हम सब टीचर्स verbose मोड में पढ़ाते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, सॉरी, हम जब कुछ करते हैं बोर्ड पर लिखते तो हम बोलते भी जाते हैं ना। सो दैट्स व्हाट इज बेसिकली द verbose मोड। ओके, राइट। सो tolerance equal to this thing, sorry, so I'm sorry, verbose equal to 0 means जो जो बैकग्राउंड में काम हो रहा है लॉजिक रिग्रेशन में उसको आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करना है, let that work go on normally. Okay, right. Again, warm start equal to false is something related to tolerance, forget about it for the time being. Okay, and tolerance, trust me, we don't alter it. Tolerance basically in very simple non technical terms आप समझिए कि कितना एरर आप टॉलरेट करोगे, how much error you will tolerate to compare between the two lines. For example, ये 2 लाइंस जो आपके पास है यहाँ पर, अगर आप कहते हैं कि, एक सेकेंड, अगर आप कहते हैं कि इसका एरर E1 है, इसका एरर E2 है, इसका एरर E3 है, तो इसमें से
कोई भी एरर को बेस्ट बोलने के लिए हमें इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा कि इन दो एरर वैल्यूज में मिनिमम डिफरेंस, मतलब एक को डिसाइड कर दो फिर आप, ये दो लाइंस अगर आपके पास है और एक का एरर वैल्यू मतलब एक का दूसरे से सबट्रैक्ट किया तो मिनिमम डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन, टॉलरेंस है ना, ग्रेटर देन 0.001. व्हाट इज द टॉलरेंस गिवन? सॉरी 0.001, इससे ऊपर होना चाहिए। अगर वो इससे ऊपर नहीं है तो मेहरबानी करके आप वो सेकंड लाइन कंसिडर मत कीजिए, मेहरबानी कीजिए एक लाइन कंसिडर कीजिए, दूसरे को डिस्कार्ड कर लीजिए आप, मतलब नहीं है ना। क्या मतलब बनता है उसके बगल में एक लाइन बनाने का जिसका एरर, इन दोनों के बीच का एरर डिफरेंस इससे भी कम है, 0.0001 से कम है, तो मत कंसिडर करो, वन ड्रॉप वन ऑफ them. Okay, this is what it in simple sense means. Now, now comes the most critical part. मतलब अभी अभी फायदे की बात आ रही है, हमारे फायदे की बात, हम सबके फायदे की बात। क्यों मेहनत की इतनी सारी? सर वो प्रिडिक्ट करना था, करेक्ट, प्रिडिक्ट करना था। Okay, now I am giving you some real student data who want to know whether they would be given the research grant or not in your college, in your university. आप अपने यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज के हेड हो, स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं आपके अंडर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, क्या आप उनको रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड करोगे? दे वांट टू नो, सो व्हाट आर यू गोना डू? जो स्टूडेंट की डिटेल्स आपके पास आए बाय ईमेल या बाय फॉर्म, आपने उनके डिटेल्स को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके ऐसे रख दिया। सो आई हैव दिस डेटा फ्रेम इन विच आई हैव समबडी कॉल्ड लिनाद, एलेक्स, फयाज, सेजल एंड विजयन. I print this. Cool. You see data set in front of you. This is what their performance has been. So Ninad has got an overall F grade. He has not been obedient during his master's program. His research score was only 10. His project score was only 20. I don't think so. उसको देखकर ही बोल सकते हैं आप इसको तो रिसर्च ग्रांट देके वर्क नहीं होगा, ये वेस्ट कर लेगा पैसा यूनिवर्सिटी के। सो पॉइंट इज दैट कि आप मत बोलिए, लेट द एमएल मॉडल वर्क ऑन योर बिहाफ एंड टेल मी कि निनाद को क्या रिसर्च ग्रांट मिलेगा vis-a-vis compared with Alex. Overall grade B, obedient yes, decent research score 78 is good score, 80 project score is also good. I think he should be given the grant. Yes, he should be, right? So can anybody confirm if this new data available with you? Please confirm yes or no. Okay, cool, everybody says data is available, fine. So what next? जो फीचर इंजीनियरिंग आपने आपके ट्रेनिंग फीचर्स पर की थी, ध्यान रखना वो सारा का सारा आपको न्यू डेटा या अनसीन डेटा पर भी करना है हमेशा, दैट्स ऑलवेज द केस, राइट? सो आपने क्या किया, न्यू डेटा में से फीचर अंडरस्कोर नेम्स उठाए। फीचर अंडरस्कोर नेम से पता है क्या क्या पढ़ा है आपको? उसमें है ओवरऑल ग्रेड, ओबीडियंट, दो कैटेगोरिकल कॉलम्स, रिसर्च स्कोर एंड प्रोजेक्ट स्कोर, दो न्यूमेरिकल कॉलम्स, चार कॉलम के नाम पड़े हुए हैं आपके फीचर अंडरस्कोर नेम्स में। तो आपने इन शॉर्ट वेरिएबल एक्स को पिकअप कर दिया है। रॉकी जी वाई क्यों नहीं पिकअप किया? वाई सॉरी है आपके पास यहाँ पर, वाई तो आपको प्रिडिक्ट करना है, वाई आपके पास कहाँ से आएगा? अनसीन डेटा है भैया। सो एक्स पिकअप किया आपने, मतलब नाम को पिकअप नहीं किया, 5 में से नाम को छोड़ दिया, बाकी 4 पिकअप करके आप यहाँ पर लेके आए प्रिडिक्शन फीचर्स में, ठीक है? अभी प्रिडिक्शन फीचर्स के डेटा फ्रेम में आपके पास दो न्यूमेरिक और दो कैटेगोरिकल कॉलम्स है, ध्यान रखिए। जो न्यूमेरिक कॉलम्स है उसको आपने जो सैनट स्केलर बनाया था ऊपर, वही सैनट स्केलर को आपको यूज करना, नया सैनट स्केलर नहीं बनाना है, कभी वैसा करते गड़बड़ हो जाएगी। आपको सैनट स्केलर जो लर्न कर चुका है ट्रेनिंग डेटा को, वही यूज होगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मतलब सैनट स्केलर को पता है कि हाईएस्ट मार्क स्टूडेंट 96 स्कोर कर सकता है और लोएस्ट मार्क 10 स्कोर करता है, तो उसको पता है कि 96 का किसने स्कोर किया तो कितना मुझे देने का है, 10 स्कोर कितना देने का है, ये उसने ट्रेनिंग से लर्न किया था। अब वो आप अप्लाई कर रहे हो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओवर द न्यूमेरिक फीचर कॉलम्स, तो आपके न्यूमेरिक फीचर्स स्केल हो गए। स्केल होकर कहाँ आ गए? वापस से आपने डम किया आपके न्यूमेरिक फीचर नेम्स में। सो न्यूमेरिक फीचर्स जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो रिप्लेस हो जाएंगे विद द स्केल्ड वैल्यूज। अगला स्टेप, पांडास डॉट गेट डमीज, ये तो करता है वन नॉट एनकोडिंग, जी बिल्कुल।
प्रिडिक्शन अंडरस्कोर फीचर्स डेटा फ्रेम में आप गए, कैटेगोरिकल फीचर नेम्स में दो कॉलम के नाम पड़े हैं, रिसर्च स्कोर एंड प्रोजेक्ट ओवरऑल ग्रेड और ओबीडियंट, दो कॉलम के नाम इसमें पड़े हुए हैं। उन दो कॉलम्स को पिकअप करके आपने वन आउट इनकोडिंग कर दिया। वन आउट इनकोडिंग करने के बाद जो आंसर आया वापस से आपने प्रिडिक्शन फीचर्स डेटा फ्रेम में डंप कर दिया। इसका मतलब अब आपकी जो डेटा फ्रेम है उसमें बहुत सारे नए कॉलम्स आ गए होंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे नए कॉलम्स तो आ गए हैं और वो ये हैं आपके सामने। ये देखिए, मैंने प्रेडिक्शन फीचर्स को प्रिंट किया तो रिसर्च स्कोर मुझे क्लियर दिख रहा है, स्केल हो चुका है। प्रोजेक्ट स्कोर मुझे क्लियर दिख रहा है, स्केल हो चुका है। ओवरऑल ग्रेड, एक सिंगल जो कॉलम था वो बढ़ गया। ओवरऑल ग्रेड ए में, बी में, सी में, ई में और एफ में। ओबीडियंट जो सिंगल कॉलम था वन आउट इनकोड हो गया, यस और नो। ओके, अब ये जो कोड मैंने अभी डिस्कस किया, क्या ये आपके पास है या नहीं? यस और नो? ओके, yes, the code is there, fine. So now my next question is, have you all got the same output as I have got? That means, have your features, numeric features being scaled and categorical features been one not encoded? Tell me yes or no. Okay, that's very good. Lots of people have said yes. Fantastic. Now your data is come in the right form. आप आप आपने क्या किया है, ये खाना है, दिस इज द फूड फॉर एमएल मॉडल. ML model needs a food in a particular way. If you give him the food in the wrong way, for example, अगर आपने कच्ची दाल और कच्चा चावल पकड़ा दिया तो वो खा नहीं पाएगा ना, राइट? उसको पकाना पड़ेगा आपको, तो आपने पकाया उसको. So now your food is ready. Now because your food is ready, the next step which you're going to do is you're going to go on to predicting. Vispita, please hold on, keep listening. I'll come and help you. Don't worry. So friends, what I can see is model dot predict. Model was made by logistic regression model. There were two methods for every ML model. There are two methods. Fit से वो learning करता है, predict से वो prediction करता है. Okay? So model dot predict is making prediction on the prediction features and I got my predictions here. बस मैंने क्या किया, जो prediction मुझे आए हैं वो मैंने न्यू डेटा, जो डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम जहां निनाद, एलेक्स ये सब डेटा पड़ा हुआ है, उसमें जाकर एक नया कॉलम रिकमेंड ऐड कर दिया. उसमें जाकर एक नया कॉलम रिकमेंड मैंने ऐड कर दिया. अब ऐड करने पर देखिए क्या हुआ. एमएल मॉडल कहता है निनाद को रिकमेंड नहीं करना, डोंट रिकमेंड निनाद्स नेम फॉर द रिसर्च क्लाइंट. Alex also he says no, although Alex is like kind of on the borderline or maybe it's a misclassification case, but Fayaz he says yes. And Sejal he says yes. But if you notice, Alex deserves to be, actually, because Alex has a better track record than, or a better score than Fayaz, but still Alex was not recommended. It says no, this is a case of misclassification. You have misclassification in front of you. Okay, let me run this once again. I mean, this is the answer. Okay, for you, maybe you get an answer as Alex is being recommended. That's a possibility. Okay, yes. So everyone please run up till this point and let me know what is your output. Yes, Vismita, can you please tell me what error are you getting? And others should keep punching. उनका डन हो गया यहाँ तक रिकमेंडेशन, से डन. Okay. Okay. So Vismita, it says that a traceback error has occurred. Data preparation, prediction which is new data, feature name, scaling by name error, new data not defined. Okay, okay, okay. Vismita, the problem is that you forgot to run this particular cell. See on my screen very carefully. You forgot to run this particular cell. आप इस cell को run करना भूल गए हैं. Therefore, it says new data is
नॉट नेम एरर आ रहा है कि न्यू डेटा फ्रेम आपको नहीं मिल रहा है उसको. प्लीज रन द सेल फर्स्ट देन रन द सेल्स लेटर. आपने सेल के आउटपुट को देख लिया लेकिन रन नहीं किया होगा उसको. Sir, can I ask one doubt? Please go ahead. Please go ahead. Sir, actually, I'm not getting any error, but the one hot encoder after using the get dummies, that you are showing the output of 1010 of 5x9 columns. This one. This one I'm not getting this set means the first part I'm getting, first table I'm getting, the down part I'm not getting it. Instead of that, it is showing 5 rows Three cross dots. 9 columns. Correct. No, that's right. And you will be seeing 3 dots also. 3 dots भी तो आ रहे होंगे आपको. 3 dots बीच में किधर आएंगे सर? भी यहाँ पर आएंगे. देखिए ये रिसर्च स्कोर, प्रोजेक्ट स्कोर आ गया, ओवरऑल ग्रेड ए आ गया, हाँ लास्ट में हाँ हाँ, ओबीडियंट 3 ग्रेड आ dots आ रहे गया. हैं. हाँ, 3 बीच में dots 3 आ रहे डॉट हैं. है. हाँ, हाँ that हाँ. means truncated. That is because of space management, it truncates the output. Okay, sir. Okay, हाँ, thank you, collab sir. truncates the output. हाँ, हाँ. Okay, sir. Yes, that is the reason, because all of you are working in collab. That is the reason I have printed in the next cell the column names. See, you would get all the 9 column names here. Sir, if I want to see that, then what is to be done? Can't help it. Can't do anything of it because in collab तो वो truncate करेगा ही. That's the reason we are printing the column names. Yes, if you want to see the values, then there is no problem. You can say df.head. You can say prediction features.head. It will print the whole data. You can do it right away and see. Bhuma Devi, do it right away and see. Prediction underscore features.head. वो पूरा row print कर देगा. What you said? Prediction? Features, or let's say whatever is the data frame name which you have used. I think you have used the same thing, right? Which I have used. You say Yes, dot sir. head method. Remember, Okay, we sir. did it, we Okay. did it in Yes, FDP1, no? yes, sir. Yes, sir. We have done. Hmm. Okay, sir. Thank you. Yes. Okay. So, friends, I hope the experience of actually taking a very simple data set and going through all this stuff was quite a learning experience. So now let's learn something more. We are going to go to the next notebook of train test split. Let me share the link of it. This is the notebook number 3, and this is for today. Notebook number 3 for today. We finished 2 notebooks up till now. This is the 3rd notebook we're going to go into. Train test split. Please, it's all yours. And I request the backend team at S.P.I.T to please take this and also put it in your records so that if anybody who's missed the session today, they can download it from the Moodle or from the WhatsApp. Sir, it is there in the chat box or what? Yes, I have posted the link of the notebook in the chat box right now. No. Oh. सर डेटा सेट भी भेज रहे Yes. थे सर. डेटा सेट किस चीज की चाहिए आपको? ये सुविन हाउस डेटा है ना सर इसमें. वो वहां कहाँ पहुंच गए आप? ये नोटबुक पहले ओपन तो कीजिए, मैं शुरू करूंगा तब बताऊंगा आपको क्या करना है. पेशेंस रखिए. यही लिंक मैंने ओपन किया तो वो आया ना सर फाइल. आपने जो अभी मुझे लिंक दिया उसको ओपन किया तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आया.
हाँ, और उसके नीचे हाउ टू स्प्लिट द डेटा, और उसके नीचे गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल अपलोड। हाँ, तो मैं आऊंगा ना इस पर. आई विल कम टू इट. नो, हैव पेशेंस. नो, व्हेन आई डू माय नोटबुक आई विल टॉक अबाउट इट. व्हेन टू डू इट, हैव पेशेंस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं नहीं, कल Sir, वो ही तो डेटा सेलेक्ट करने में मुझे गलती हो गया, इसलिए Right, right, right. sir, sir, But sir, I'm not but getting doing the links here. Sorry, sir, no I'm problem, not no getting problem. the one. Once again, Yes, it's in the chat. No, Bhuma Devi, it's visible in the chat. I can see it in front of you in the chat. Okay, okay. Again, Varsha is reposted in the chat. Please pick it up. So many people have reposted. Dr. Pushpa, Varsha, everybody has reposted the same link. If anybody is having the access to the, if anybody in the backend committee is having access to the WhatsApp link right now, please post it on the WhatsApp also. So that Bhumadevi, what are you seeing? Are you seeing the chat or not? Please look on my screen. You can see three people have posted the links for you. Ready? sir, पता नहीं वो मेरा chat, एक मिनट. आप चैट को देख नहीं रहे हो ना, उसके लिए आप चैट में नहीं हो. You're not seeing the chat. हाँ, ये किधर गया पता नहीं. Exactly. व्हाट्सएप में ठीक है. पोस्ट किया मैडम, देख लो, नहीं तो वहाँ मैंने भी व्हाट्सएप में डाला है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैडम अब सब जगह अवेलेबल है, मूडल पे भी डाल दिया है. उधर से लॉगिन देख लो. But only, sir, the point is that by the time she picked it up from there, I would have gone ahead. Oh my God. Right. Chaliye. So, friends, don't jump into running any of the cells of the notebook. Let's understand what is the objective of the notebook. Okay, and why do we have this strong principle that whatever data set is given to us, we always split it into two parts. One is training data set, other is testing data set. There is training and there is testing. Why we do so? Okay. Now let's get this very simple thing clear. You make any ML model, irrespective it is regression or classification or clustering, immaterial. You make any ML model. How do you convince yourself? You forget your boss, you forget your client. अपने आप को आप कैसे convince करते हो कि जो आपने काम किया है वो अच्छा है? Sir, I'll test it. Exactly. You will test it. So, you train this model, let's say, on 80% of the data. And that 80% data was the training data, TR. But now you will test it, right? So for testing it, you are going to test it by means of some another 20% of data. Of course, you can choose test size 20%, 25%. Default is 25%. Default is 25% test size and 75% for training. But usual figures which we use in our work is 80-20. But trust me, आप इसमें से कोई भी combination जो आपके मर्जी में है वो आप choose कर सकते हो. Okay? Now, the testing data which is given to the ML model helps you to measure the performance metric of the ML model. Now the question comes is, what is performance metric? Very interesting. The performance metrics depends upon what is the ML model per se being used for. ML model क्या कर रहा है आपके लिए? Is the ML model being used for regression, or is the ML model being used for classification? So if the ML model is being used for regression, then you could have these parameters for measuring its performance: mean absolute error, mean squared error, or root of this, square root of this, square root of the mean mean squared error, and it is called as RMSE, root mean squared error. In fact, this last parameter which I spoke about
is the most commonly used. RMSE is the most commonly used for measuring the performance of the regression algorithm. The next. There are others also, but the list is endless, so I'm just putting the primary ones which we very commonly use. For classification, we always print the confusion matrix. There's nothing that confuses, please don't get carried away with the words. We print the confusion matrix. The confusion matrix indicates to us how many entries were correctly classified and how many entries were misclassified. Further, you could also print the classification report, which gives us information of F1 score. There are some parameters, don't worry about it. F1 score, and if you feel that you want to know about F1 score, about support, and about recall, I'll share some extra notes and modules with Rathore sir, and he will share it over the Moodle for extra reading. Okay, so classification report or accuracy score Okay, so sorry. So these are the parameters which I'm going to use basically for my classification filtering. Now the point is, the big question now is कि भाई हमने RMSE regression problem में print करना है, चलो ठीक है. क्लासिफिकेशन में आपने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट करना है. इससे समझ में आ गया आपका मॉडल अच्छा है कि बुरा है. ठीक है, cool, right? Now the point is this. Notice one very critical part about both of them. The first set of parameter जितना लो हो उतना अच्छा है ना. एरर वर्ड से क्या समझ रहा है आपको? एरर तो जितना लो हो उतना बेटर ना. एरर फिर किसी भी किस्म का हो, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, एरर ही है ना. हाँ, बात तो सही, करेक्ट. जैसे रास्ते पर ट्रैफिक किसी भी किस्म की हो, ट्रैफिक ट्रक की हो, गाड़ियों की हो, बाइक्स की हो, ट्रैफिक जितनी कम उतनी अच्छी. किसकी ट्रैफिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. एरर जितना कम उतना बेटर. सो एरर जितना कम उतना बेटर ये इंडिकेट करता है कि this is called as loss metric. This matrix, the matrices, performance metrics used for measuring regression, any regression algorithm is called as loss metric because we want the loss to be as low as possible. Or they are also called as negative performance metrics. जितना negativity कम हो उतना better. आप कोई भी term use कर सकते हो. Negative performance metric, loss performance metric, or simply loss as low as possible. Look at the other part here. एक्यूरेसी स्कोर जितना हाई उतना बेटर. बात तो बराबर है, करेक्ट है. इसके लिए एक्यूरेसी स्कोर जितना हाई उतना बेटर इंडिकेट्स, इट इज नॉट कॉल्ड प्रॉफिट मेट्रिक. ऐसा कोई प्रॉफिट मेट्रिक करके कोई चीज नहीं होती. दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव मेट्रिक्स, वेयर पॉजिटिव मेट्रिक मीन्स दैट you want it to be as high as possible. The more higher it is, the better it is. It's more merrier. It's good. Okay. So understand the gist of the notebook. क्यों डेटा को मैं ट्रेन टेस्ट फिट में स्प्लिट करूं? इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका एमएल मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है. टू फाइंड द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, it is important for me to have some data as a test data. So sir, I have data which is unseen. No, I will use an unseen data. My friend, unseen data is used or can be used only when you have deployed your model. डिप्लॉय तो तब करोगे ना जब आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सेटिस्फैक्टरी आ रहा है. तो पहले आपका डेटा, कुछ डेटा 80% ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, 20% will be used for testing. If you get satisfactory performance metric, now that depends. RMSE और accuracy को डिपेंडिंग अपॉन क्या आपने मॉडल क्या बनाया, उसके बाद आप तीसरा स्टेप में जाओगे, where you would go and upload your model onto a web server or onto an application server. So you're going to deploy your model on the web. And once you deploy your model, you will have to have a beautiful front end either through a web application or through a mobile app from where people can send either a request to an API or it could be a simple request response model. So that they basically give some parameters to your ML model. You have your ML model deployed here. Same thing, जो आपने किया, बस only thing is to deploy the ML model, we make a pickle file, which you're going to do it.
आर यू मेकिंग अ पिकल फाइल फ्रॉम द एमएल मॉडल? मे बी उस समय पर ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप में से काफी लोगों को प्रैक्टिकल ना कर पाओ, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं सर वो सारे के सारे कोलैब नोटबुक में है, सारे के सारे रन बटन खाली दबाना है आपको। इफेक्टिवली अगर आप देखो तो कल रन बटन क्लिक कर रहे हो, हाँ सर हम कोड भी टाइप कर लेंगे, लेकिन यहाँ कोड टाइप करने के अलावा बहुत सारी और भी चीजें करनी पड़ती है। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 2 घंटे का सेशन जो मैं लूंगा मैं केवल आपको वॉच करने को कहूँगा, और जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पर यू कैन देन यू नो री सी इट वंस और ट्वाइस एंड do it once again. Okay, because there are some configuration parameters on every person's PC, no, every person's laptop. So those also have to be made ready. Otherwise, how do you do certain things? Because you have to install a web server here and do a couple of things, right? So you upload a pickle file on the web server, and so from my client, which could be a web page, which could be a mobile app, I'm going to give some input parameters to the pickle file, and the pickle file is going to take that input, make some predictions, and give it back here. Friends, when predictions come to the client's code, which could be written, if it's a web page, it could be a code in PHP, it could be a code in JSP, it could be a code in ASP, active server pages, Java server pages, or PHP. Any of this. These languages will pick up the predicted output and will display them in the proper way on the web page. Okay, this is how the whole thing works. Okay? That's the way everything works on the web nowadays. Okay? Right. So I hope this is clear. Objective is clear. तो क्यों पढ़ना है इसे? ठीक है. अब डेटा को हम स्प्लिट कैसे करें वो बात की बात है. पहले हम कुछ मॉड्यूल का नाम देख लें और उसे याद कर लें, या आपको हर जगह यूज करना है. मॉड्यूल का नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. ये मॉड्यूल अवेलेबल है इन दिस लाइब्रेरी sklearn.model_selection. So from model selection, I'm importing train test split, and then I'm using this function train test split to split my x and y. टेस्ट साइज मैंने दिया हुआ है 0.2, मतलब 20% will be testing data, 80% will be training data. Okay? अब सवाल उठता है इसको हम कैसे अप्लाई करें. चलिए उस मुद्दे में आते हैं. ओके, नाउ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स वर आस्किंग ना कि डेटा डाउनलोड क्या करना है. अब हम उस पर आए. अब आराम से, कोई घाघा ही नहीं. आपको मैंने एक ड्राइव लिंक देके रखी हुई है. ठीक है, आप प्लीज इस ड्राइव लिंक को ओपन कीजिए आपके एक ब्राउजर के न्यू टैब में, और इस डेटा सेट को डाउनलोड कीजिए अपने पीसी पर. नॉर्मल एक फाइल डाउनलोड कैसे करते हो आप फ्रॉम गूगल ड्राइव, वैसे. ठीक है, डाउनलोड हो गया. राइट, ये गया होगा आपके डाउनलोड्स फोल्डर में. उसके बाद ये जो है ना सेल, 2 लाइन जिसमें लिखे हुए फ्रॉम google.colab import files .upload, इस सेल को रन कीजिए. तो एक बटन आएगा जो कहेगा चूज फाइल. जो फाइल डाउनलोड की है आपने उसको सेलेक्ट कर दीजिए, वो अपलोड हो जाएगी. ठीक है, और जितनों का ये हो गया वो मुझे यस कहें. किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे पूछिए. Okay, Vaishali says done. Manoj says done. Very good. Dr. Kranti says yes. Very good. सर डाउनलोड करके करेक्ट. डाउनलोड करके आपको अपलोड करना है अपने कोलैब में. अपलोड अच्छा, इससे होता है. डेस्कटॉप पे सेव करके फाइल्स को अपलोड करना है ना. ओके. हाँ हाँ, सेव करने की कोई जरूरत नहीं है. वो तो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड फोल्डर में जहाँ पड़ा है पड़ा रहने दो उसे. तो अच्छा. आपने ये वाला कोड रन करना है. आप ये वाला सेल जैसे ही रन करोगे ना, तो हाँ वो आपको एक बटन दिखाएगा यहाँ पर चूज फाइल. उसको हाँ, क्लिक करके आपके अच्छा. हाँ हाँ क्लिक कीजिए और आपका फाइल जो डाउनलोड किया वो सेलेक्ट कर लीजिए. हाँ ठीक है. हाँ, और वो अपलोड हो जाएगा अपने आप से. 1 मिनट सर, ये होने दो पहले.
Okay, that's almost the whole class. The majority of the participants have said done. So anybody who's not done will please move faster and punch me a yes on the group that it is done for you also. हाँ सर हो गया ओके यहाँ आ अभी गया अभी डाउनलोड हुआ, इतना समय डाउनलोड करने के लिए लगा? नहीं नहीं Oh my नहीं God. वो हाँ, अपलोड हो गया अपलोड हो गया, हाँ हाँ, ओके। आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट है इसलिए थोड़ा थोड़ा धीरे अभी सीख रही हाँ, हूँ नहीं आप मैनेजमेंट से हो, लेकिन कंप्यूटर तो मैनेजमेंट से नहीं, कंप्यूटर को तो फास्ट काम तो वही तो चाहिए। सर अभी सीख रही हूँ जल्दी जल्दी तो चलिए बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। Right, so friends, moving on to the next thing. So please punch me a yes. Have you also done pd.read csv? और आपके फाइल का नाम आ रहा होगा, उसमें लिखा होगा Suven housing data.csv. जैसे ही डेटा लोड करोगे तो Iowa town data gets loaded here, and I'm doing a head one. That means I just want to watch the very first record. Bharti has said the shape of the data is 800 records into 13. Yes, I think so, Bharti. I do not know. I have to check the. So, Bharti, I don't think so. It should be 13 because it shows me 22 columns. So I think you've gone wrong somewhere. 800 into 13 नहीं होगा. Bharti, check it out. Shape check करके check कर लो आप. Vispita, the name of the file is different. Is okay. That's okay. That's not a problem. So are you trying to say that in your file the shape is But 13 the columns? file which we have uploaded, that is Pokemon. Pokemon. Yeah. Oh my god. Oh my god. Uh-oh. sir. Hello, sir. ML underscore Pokemon. So this is Apeksha. Our Yeah, file but name please. is Pokemon actually. So I changed the while making the data frame. I have changed the name of the file itself. No. Oh, that is okay. That is okay. You change the name of the file, but that is okay. So that's not any chalo, that's not needed. Pokemon आगे हम use करेंगे, but not immediately. Okay. So let me do one thing, friends. Let me share this link with you. Let me check out what is this link. Is it Pokemon? I don't know. गलती से ये Pokemon का link आ गया होगा. Hold on for a second. Hold on. सर वो पोकेमन का लिंक है। हाँ exactly सर, मैं यहाँ check कर रहा हूँ कि cool. So जो link मेरे पास है वो correct है. Where is it? Yes. Friends, download from here. I've just given you the link for housing data set also. Friends, please repeat the same process with respect to the housing data set.
वर्षा, मैंने ये डेटा सेट अभी भी ओपन करके आपको जो ग्रुप में पंचिंग किया है वो पोकेमॉन का डेटा सेट नहीं है, हाउसिंग का है। It takes time, sir. हाँ, that is okay. Time is different, but हाँ, Indrajit says it's a housing data set. That's right. Yeah, absolutely. Correct. अभी हाउसिंग का ही आया सर अभी। Right. हाँ, हो गया और 100% डन आ गया। Very good. सर अभी मुझे एक डाउट है, अभी हम इंपोर्ट में जब हम इसको रीड करते हैं तो सेम नेम से रीड करना है सर हमें, कि अपना जो पाथ है वो देना? नहीं, पाथ नहीं देना है आपको। जो आपने जो फाइल डाउनलोड किया है ना, जो कोलैब में अपलोड किया ना, तो आप जब कोलैब में फाइल अपलोड करते हो ना, तो यहाँ पर आपको आएगा, फाइल का नाम भी आएगा ऊपर। हाँ आया सर। हाँ है ना, बस उस फाइल के नाम को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दो। ओनली फाइल का नाम, अच्छा बस। अच्छा ठीक। और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, ओनली फाइल का नाम। Okay, Vismita, Supnali, Varsha, all saying that it is done, and Apeksha says Apeksha, this is a very small file actually. This is we are dealing with these small files because of the workshop, but files are usually very large, much larger than this. Okay, right. So, friends, all of you have reached to this point where you have a Iowa town data.1 which tells you that you are printing the very first record, and that first record shows you some columns, and this is a housing data set, so it's very natural. You will have information like the address, the number of rooms the house has having, what is the price of the house in Australian dollars. This is the price of the house in Australian dollars, 1,48,000. Oh, sorry, like 14,80,000 Australian dollars. Vagera, vagera. Okay, so basic information of the housing data set is given. Now, please turn off your audios, everyone. Be careful. Your audios shouldn't be, when you speak, turn off your audio immediately after that. Okay. Now, the point comes. हम स्प्लिट कैसे करें डेटा? बहुत सिंपल है और एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल प्रोसेस है. You will write from sklearn.model selection, import train test split. Next, we need to realize, personally we all need to realize, कि in the housing data set which was given to you, what do you think you will use this data for predicting? क्या आप इस डेटा को किस चीज के लिए यूज करोगे, वो आपको खुद को सोचना है. जो प्रॉब्लम डेफिनेशन होगा वो बोलते हैं हाँ बराबर है, प्रॉब्लम डेफिनेशन होगा, लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन नहीं दिया है ना आपको, है ना. तो आप अगर खुद सोचे कि जो डेटा सेट आपके पास है, what do you think is the most common sense thing to predict? I think the most common sense thing should be predict is the price of a house. You're right. Given all parameters of a house, I would be willing to predict, or I would be intending to predict the price of a house. So my intention is going to be to predict the house of a price, provided you give me information like these. You give me which suburb the house belongs to, how many rooms the house has, who's the seller. Seller means kind of a builder. Builder कौन है उसका? तो reputed builder, price high. Then what is the distance of the house from some prominent spot of your city or your suburb? Okay, does this house has a car parking? Yes, how many car parks? वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. So you are going to give me all these housing parameters which we need not get into detail right now because हमको खाली डेटा को स्प्लिट करना है, कुछ एनालिसिस नहीं करना है. तो इसके लिए we will choose the y variable as the price of a house. That's what I did here. Notice, Iowa town data, I said drop the price of the house. So I dropped one column. 22 columns are there. You dropped one of the columns, 21 left. Y axis equal to 1. Axis equal to 1 means drop method says where should I find the price column? कहाँ ढूंढूं इसको? तो आप इसको ढूंढोगे कॉलम वाइज खोज कर. सो आप लोग जब कॉलम वाइज स्कैन करोगे, इमेजिन अगर मैं रो वाइज स्कैन करता तो मुझे प्राइस कॉलम कभी दिखता नहीं. रो वाइज से मुझे खाली इंडेक्स नंबर दिख रहा है 0 1 2. Oh, price column I will see only if I start scanning vertically. Correct. If you start scanning vertically, column wise,
you would see the price column. This information we have to only give now to the poor drop method. So we have given. So drop method drops in. 21 columns are left which are dumped in the variable X. Iowa town data, only price column is picked up, which is the variable Y, which is what you want to predict, the target variable. I dump it into Y. Cool. Now what? Now, this is a standard convention. All your features will go into X, that also capital X. And all the target variables will go into Y, small y. It's not by mistake this capital and small y. This is a convention. All input features, capital X. Target variable, only one, that is small y. Okay? So, I'm using the function train test split. I gave him X and Y. I gave him the test size 0.2, 0.3, 0.25. Actually, your choice. Huh? I've given 0.2. Now, why we are giving random state here is because if you don't give the random state, understand this very well. Huh? If you don't give the random state, I'm typing it also. If I don't give a random state, then the split, I'll puncture this on the group also, then the split would be random for all of us. So random का मतलब random ही होना चाहिए for all of us. Oh, hold up. See, when you actually perform any random activity, let's say you have got 10 records. Huh? Total data set has 10 records only. If I am saying that you do a random split of 80-20, then 80% of the split, let's say in your set has record number 1, 2, 4, 5, and 6, and then let's say 9. One more, 10 records in total. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more record should come. What did I miss? Let me check. What did I miss? 20% of test set. Let's say 3. Yes, I missed 3. 4, 5, 6. I missed 7. Put up 8. Right, so I hope that's going clear. Now the point is that this random split has happened. I want this to be same for all of us. मैं चाहता हूँ कि हम जो एक ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, we are as a big family all together, we are executing some code. I want that we all as a big team should be having the same random split for the test data and the train data. Same records will go for you, same records will come for me also. So our answers will match. Otherwise, all our answers are going to be different. How do we compare them? कैसे हम एक दूसरे से बात करें, कुछ compare करें? इसके लिए, ठीक है? So I want to standardize the random set. Therefore, we're giving the random state back. So if I don't give the random state, then the split would be random for all of us. So by giving the random state value, we are standardizing the random split values. That's what the basic funda is. Okay, so all of us will get this as an example. I'll just punch this over the group. Yeah, friends, I punched it to you. If you wish, you can copy all this and put it as a comment in your Collab notebook. आपको पता है ना, आपके पास text cell होता है यहाँ पर ऊपर. You can add a text cell and add there. Or right now you can make a notepad file and dump everything there for your kind of self future reference. Okay. Now, after I apply the train test split, I realize that I'm going to get 4 return values. X train 80%, X test 20%, Y train 80%, Y test 20%. Okay, to be very, very honest, actually speaking, this X in X train should have been capital. X is always capital. अभी मत करो capital, but अभी जैसा है वैसा रहने दो, but होना चाहिए था capital. ठीक है?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कन्वेंशन है बस, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोडिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, so now what I'm doing for my satisfaction, for my visual satisfaction, I am just printing X train head to, X test head to, Y train head to, and Y test head to. So I'm just trying to print two records of each of the set, just to satisfy our data output aa raha hai, kind of. Yes. So all of you, please tell me, is this train test split code given? Somebody said line number 11 code is needed. Very good. And that comes your Apeksha, as you said, firstly, that comes your way. Please check. Some line of code may be missing. In case if it is missing, please, so somebody prompted that line number 11 of train test split is missing. So please check. Okay, Vishmita says there is a name error, means some variable is not defined. Name x is not defined, Vishmita. That means you have to define the variable x, no? See, the variable x is this. Iowa town data dot drop price access equal to 1. Is this line there? You check first. Don't run the cell like that. First check, is this line there? So can you post line number 11 in the chat box? Can you copy the line number 11? I have just posted. No, I have just posted line number 11. 1 minute back only I posted line number 11. Okay. So I was maybe seeing here. हाँ sir. Yeah. हाँ आ गया. Okay. Sir, So again, name error is coming. What is to be done? That capital X. okay. Yes. See, please, you need to watch. All of you need to watch my screen very carefully. Everyone who's getting this error, ki X is not defined. Please notice I have used capital X. What have you used? If you use small x here, then please give small x here as a first parameter to train test split. Yeah, you have used capital X. We have to give small x. No, don't give. No, make it capital. No, make this variable as make the 8th line as capital X, and also then this train test split will work. Simple. Yeah, sir. Make the line number 8 as capital X. Line number 8 में जो small x Okay. हाँ. Okay, there's a majority people which are saying it's done. Very nice. I'm still waiting for some more confirmations. Okay, you want me to see the output? Yes, sure. Just a second. This is what the output looks like. It may be the case that your output may get truncated. वो 3 डॉट से ट्रंकेट हो सकता है. देखो मेरा भी ट्रंकेट हो गया अभी, तो मेरा भी आउटपुट नहीं आया. ठीक है. Okay, now majority people in the session have said that they have been able to split the data, so that part is over. Very good. Let me move on. There is a lot of theory part here. Please make sure that you are reading it. Yeah, Apeksha, that's okay. Yeah, output is different. It's okay, Apeksha. No problem. No problem, Apeksha. No problem. Output is different. Just check your test size is 0.2 or not. Just check that. Sir, output is different because of that random state. What is a random state, by the way? What have you given random state? Random state. You just now explain. No. What have you given as a random state? मेरा random state value 0 है. आपका क्या है? हाँ, 0. नहीं, फिर तो आउटपुट सबका सेम ही आएगा ना. अगर 0 ही है तो सेम ही आएगा आउटपुट. I don't think so it will differ. Should differ. But anyway, that's a very minor problem. So if it's differing, what configuration are you using? Are you using a Mac or are you using Windows 10 or Linux? What are you using? Windows 7. Windows 7 Professional. Yeah.
because if you don't give the random state value, no, it takes the system date and time as the system timestamp. So the reason I asked you the operating system configuration. But anyway, even I'm using Windows 7 Professional, so it shouldn't have differed. But anyway, that's a very minor thing. So even if it's differing, there's no problem. So, but you are getting these columns ना, unnamed, zero, suburb, address, यही columns आ रहे हैं Yes, ना? yes, 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 sir. Yes. ठीक है, फिर कोई दिक्कत, fine. So now, if you just uh, quickly, in a span of 10 seconds, just scan this test size and train size. Remember, you have two parameters here, test size and train size. You should only give only one. Never give both. Doesn't make sense ना? Because अगर आपने test size दिया, तो जो डेटा टेस्ट साइज में जाएगा, 1 माइनस दैट विल गो इन द ट्रेन साइज, ऑब्वियसली, है ना? और दूसरी चीज, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट साइज, मतलब अगर आपने स्प्लिट करते समय टेस्ट साइज नहीं दिया, तो default value of test size is 0.25. Okay, it's 0.25, 25%. Right. Now, so all of you have a small test. What's a test like? The test is, it's a 2 minute test on the train test split the iris dataset into 70-30. Please take it as a home assignment for today. Please take it as a home assignment for today. Whether it's assessed or not assessed is a different issue by the backend team for assessment. But remember, if you remember yesterday's assessment, there were a couple of things. There's an MCQ test, there is a case study, there is an impromptu assignment given during the lecture. So this is an impromptu assignment of 4 lines, but trust me, I've already given you almost 80% of the things. You'll be wondering, from where do I load the iris data set? Just do a little Google, you'll get it. You will get it. Okay, no, Bharti, you haven't to go to Kaggle. Come on, Kaggle जाने की कोई जरूरत नहीं है. Iris dataset is available in sklearn library. It's readily available in sklearn library. Kaggle में तब जाना चाहिए जो आपका ready dataset available ना हो. Okay, so if you go to just type iris dataset on Google, you will come to sklearn. You have download from sklearn library only. Okay, there is a ready method. Download नहीं करना dataset को. There is a ready method called load iris in sklearn library. If you use that, your dataset will get loaded. Okay, right. So that's hint which I have given. If you want, I can give you the link directly. Beyond that, I cannot help. Beyond that, if I help, then S.P.I.T committee members will scold me right and left. Okay, sklearn.org. I have a data set here. Sklearn load iris.html page. Let it load. It's loading. So you have all the information here that this iris data set is basically about some flowers. Okay, so iris is a flower, by the way, and this data set consists of 150 samples. That means 150 flowers का record इसमें है, और कुल मिलाकर flowers 3 अलग-अलग categories या 3 अलग-अलग classes के हैं. Per class they are having 50 samples. Okay, they are having 50 samples. So 50 into 3 is 150, and you can skip this reading part. Come straight over here. Please notice, from sklearn.datasets, import load iris, data.load iris. That's it. Your work is over. Your whole data has come into the data set. But the problem is, I repeat, the problem is this load iris data set. When he loads the data, he loads it as a numpy array, not as a data frame. I'm giving this hint to you all. It loads the data as a numpy array, not as a data frame. Okay, so be a little careful. If you don't want to use this, so you have to do a little hard work. Maybe I have given in the comments. Okay, I have used drop species column. Oh, okay. Let me give you a better hint. Load iris, no. Load iris data set from Suven. Load iris data set from Suven. Wait. Suven load data set, that's right.
C-born visualization on iris dataset Kaggle, तो उसने भी dataset वहाँ से load किया होगा C-born से. C-born load dataset. Just give me a second. Load dataset. Iris should work. Oh my god, so much time watching. My god. My god, so much of time for searching. Ridiculous. Just give me a second. Because if you get stuck in loading the data, then you're held up. Code for loading the data. It's import C1. So you have to import C1 library. Make sure you have imported the C1 library and then did the iris dataset. I repeat, बाद में भेजे वो पहले आएंगे. हाँ, ठीक है. और आपको रेफरेंस लिंक चाहिए. कैगल का लिंक तो है ही, बट मीडियम का लिंक भी मैं डाल रहा हूँ, जैसे आप अपने आप से असाइनमेंट को आराम से कर सकें बिना किसी हेल्प. अभी कर लो, वेट ही मत करो, अभी कर लो, अभी मुझसे वेरीफाई कर लो. कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा. Steps are there. I'm getting error at drop. It is giving me output as well, but giving error too. Can you punch the error, please? Drop pay. When I'm writing a data one dot drop, sir, I will just paste my code. एक बार आप ये देख लीजिए कि जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हैं और जो डेटा सेट आपने ऊपर लोड किया है वो सेम है ना, तो उसके अंदर कॉलम का नाम सेम होना चाहिए. बिकॉज आई हैव रिटन हियर ड्रॉप कॉलम स्पीसीज, तो ऐसा तो नहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दिया और स्पीसीज के स्पेलिंग में. प्लीज चेक दैट. ओके, भारती हैज पोस्टेड द कोड. भारती, आर यू ट्राइंग टू से इसमें आपको एरर आ रहा है डेटा वन डॉट ड्रॉप स्पीसीज एक्सेस इक्वल टू 1? Yes, sir. Sir, it is giving me output as well, but it is giving me during handling the above exception, I am getting another, and the attribute error is drop. I'm surprised. That shouldn't have happened because that target variable is species. So there is no reason for it to happen. Can you punch the error on the group? Sir, posted. Key error. So this is an internal error being generated. This has nothing to do with respect to our code because your code is of 4 lines, so it can't have errors at 114, 117 lines. So this is an internal error being generated, but I don't know why it is being generated. I can't comment on it because it works. It works absolutely. It works. Okay. Let others also try. Let me see if there's common error. Then I'll find a solution to it. Wait. ओके, आप कह रहे हो भारती कि आपका आउटपुट आ गया, इसका मतलब ऑप्शनली यू में है प्रिंटेड द ट्रेन एंड टेस्ट डेटा सेल्स. वो प्रिंट करके देखें आपने? No, sir, I'm doing that now. No, please do that. Yeah. Indrajit says species is getting dropped. Okay, एक से इंद्रजीत, did you put species as capital S or small s? S क्या रखा आपने, कैपिटल या स्मॉल? प्लीज चेक करो.
ठीक है, ओके। इंद्रजीत, अगर आपका पूरा कोड रन हो चुका है तो पूरा कोड विदाउट द कमेंट्स, पूरा कोड विदाउट द कमेंट्स लाइन बाय लाइन ग्रुप पर पंच कीजिए, सो दैट कैन हेल्प अदर्स। फर्स्ट यू विल पंच लोड द डेटा सेट वाला लाइन। इंपोर्ट सीबॉन एज एसएनएस, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, मैटप्लॉटलिब बराबर आइरिस डेटा सेट लोड किया, वेरी गुड। x1 इक्वल टू iris डॉट ड्रॉप स्पीसीज एक्सेस इक्वल टू 1। बाद में x1 वापस से क्यों लिखा है इंद्रजीत? वापस x1 लास्ट में क्यों लिखा? ओके, बट ऐसा इंद्रजीत पोस्ट करोगे ना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जो नहीं कर पा रहे वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आपको लाइन लाइन पोस्ट करना चाहिए, नहीं तो वो चैट में वो क्लब कर देता है ना सब कुछ, टेक्स्ट की तरह वो क्लब कर देता है लाइन बाय लाइन। सो यू शुड पोस्ट इट। भाई इंपोर्ट्स होने के बाद एक एक लाइन पोस्ट कर देते हैं। पहला ओनली द लोड डेटा सेट, वो किया आपने, करेक्ट। नेक्स्ट इज ड्रॉप स्पीसीज, वो भी कर दिया। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट ओनली स्पीसीज टू गेट द टारगेट वेरिएबल वाई। क्या बात है इंद्रजीत, इतना समय लग गया स्पीसीज कॉलम को एक्सट्रैक्ट करके एक वेरिएबल वाई में लेने में? बी क्विक। बाकी ट्रेन टेस्ट का तो कोड तो मैंने देख ही रखा हुआ है सबको यहाँ पर। Dr. Kranti, perfect. Y is equal to iris species. Very good. That's the right line. Y equal to iris species is the line. Extract only species to get the target variable Y. Very good. Correct. अगला लाइन तो मेरे ख्याल से किसी को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। X train, X test, Y train, Y test equal to train test bit XY is already given. खाली uncomment कर दीजिए उसको. Just uncomment it. Just uncomment it like this. Uncomment कर दिया उसको. That's it. Sir, I got that error. Sir, You when I got that was error? Sir, sir, when I Which error? was doing first time na, so I was just Uh-huh. writing load underscore data set. But when I return SNS, I mean this C1 dot load data set, then I'm getting perfect. Correct. Yeah, obviously you have to type SNS to type करना पड़ेगा ना, because load data set method is defined in the library cborn. Yes, sir. Right. Yeah. Correct. Okay. So how many people are done completely? Only Apeksha says done. None of others have acknowledged. Come on. How many people have finished with this small mini assignment? सर वैल्यू एरर आ रहा है। Can you punch the error, Bhuma Devi? एरर कॉपी करके यहाँ पंच कर सकते हैं चैट में प्लीज। Found input variables with inconsistent number of samples. Okay. See, Bhuma Devi, what is going wrong? I'll tell you. Your dataset which is being used here for x and y is unfortunately you're using small x and small y. और आप नोटिस करो कि जो डेटा सेट है वो कैपिटल एक्स में लिया गया है ना, आपको डेटा सेट चेक करना पड़ेगा।
आपने जो डेटा सेट स्प्लिट किया है यहाँ पर जो कोड लिखा है, ओके, I'll Bhuvan will see my screen very carefully. Yes, sir. या सो लोड द डेटा सेट करने के लिए क्या किया आपने? आपने क्या टाइप किया? iris is equal to sns dot load data set, and then you give what? What did you give? Iris. Iris. Yes, Iris. राइट, ओके। इसके वजह से आपका iris का डेटा सेट लोड हो गया। राइट, फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने? iris डेटा फ्रेम में से जाकर आपने ड्रॉप किया आपके स्पीसीज के पर्टिकुलर कॉलम को और एक्सेस स्पेसिफाई किया होगा। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसके वजह से व्हाट डिड यू गेट इन हैंड? आपने जो राइट लेफ्ट साइड में वेरिएबल लिखा है उसका क्या नाम है? वो वेरिएबल उधर लिखना है ना सर? वो नहीं, टेक्स्ट आपने क्या नाम लिखा? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपने वही क्या? इंद्रजीत सर ने बोला ना, डाला ना, वही लिखा x1 लिखा है। करेक्ट, x1 लिखा, ठीक है। राइट, तो आपने लिखा x1, इसका मतलब आपका जो इनपुट वेरिएबल है किसमें आ गया? x1 में आया है। राइट, करेक्ट। यहाँ पर आपने क्या लिखा? y इज इक्वल टू iris spices। बोलिए बोलिए, मैं वेट कर रहा हूँ, आप बोलिए। आइरिस क्या हाँ, अंदर y क्या? इज इक्वल टू आइरिस अंडर स्पीशीज लिखा का है। बराबर, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x वेरिएबल है, x फीचर्स है, वो x1 में पड़े हुए हैं, कैपिटल हाँ, x में नहीं। आपका ये कैपिटल x के बजाय x1 आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? सॉरी। ठीक। Cool. So a lot of people have done it. That's fantastic. But I'm still waiting for a few acknowledgements. Bharti says done. Dr. Kranti says done. Manoj says done. Apeksha done. Venkat done. Others please acknowledge. Good. Vaishali says done. मुझे इंडेंट का एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट करके। हाँ, वो क्यों आ रहा होगा? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मीनिंग तो से ये ऐसे है ना, तो इसको आप डिलीट करके ऊपर ले लीजिए सिंगल लाइन में। हाँ, सिंगल लाइन में ही है सर मेरा। एक्सट्रेन एक्सट्रेक्ट, अच्छा x1 के बाद स्पेस भी है, y है। वो आपने जैसे ही वो कमेंट किया है ना, तो वहाँ पे एक स्पेस रहेगी। मेरे केस में भी वैसे ही हुआ था। तो फर्स्ट एक्स के पहले एक स्पेस है, उसको रिमूव कीजिए। कहाँ सर? कहाँ मैम? एक्स ट्रेन के शुरू में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। एक्सटेंड के शुरू में, हाँ, वो तो उसको पूरा पीछे लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करके। हाँ, आया आया। मीन्स वो पहले एक स्पेस था। ठीक है, मैं अभी रन कर। नहीं आया मेरा तो। Bharti, are you punching the error or are you punching the code? I don't understand. What is this? Code. Oh. Code क्यों punch कर रहे हो? सबका हो चुका है भारती. Why are you punching the code now? Because this chat window over here confuses the code more than actually helps. It confuses more. Okay, right. So friends, I hope majority people have done this, and सर you're मेरा almost. रन नहीं हुआ सर। रॉकी सर, मेरा रन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंपोर्ट वो सब वो से ही दिया। इंपोर्ट cpan as sns, इंपोर्ट pandas, इंपोर्ट मैथप्लॉट, iris और ड्रॉप स्पीसीज के लिए x1 दिया, y दिया। ये जो इंपोर्ट वाले जो चीजें हैं ना, क्या आपने इनको ऐसे दिया है? जरा देखिए जरा स्क्रीन पर मेरे, आपने इनको ऐसे दिया है 3 सेपरेट लाइंस पर, जैसे मैंने अभी भी दिया? हाँ, ऐसे दिया सर। आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं ना? हाँ, देख रही हूँ सर। पहला इंपोर्ट, फिर वापस दूसरा, हाँ और फिर तीसरा। हाँ हाँ, उसके बाद हाँ, फिर बाद में iris लिखा, iris इक्वल टू sns डॉट लोड अंडरस्कोर डेटा सेट iris लिखा। लोड डेटा सेट का आपने कोड लिखा, आप ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। मैं अभी ये देकर पूरा प्रॉपर अरेंज कर देता हूँ। लोड डेटा सेट एचकेलन, ये तो हो गया। हाँ, उसके बाद ये वाला फोर्थ लाइन लिखा सर मैंने अभी, हाँ, जो आपने लिखा था। इसके बाद लोड डेटा सेट के बाद ये आया फ्रॉम एचकेलन डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड वो आयरेट। नहीं। हाँ, फिर कैसे आएगा, कैसे लोड करेगा, आप बताइए मुझे।
था, तो उसमें तो नहीं दिया था चैट में। एसके किया मैंने, ओके। फ्रॉम एस्केलॉन टू डेटासेट इंपोर्ट लोड आइरिस, बट ये लोड आइरिस की जरूरत नहीं है बिकॉज हम जो डेटासेट लोड कर रहे हैं वो सीबॉर्न, इसकी जरूरत नहीं है, सॉरी इसकी जरूरत नहीं है। हाँ डायरेक्टली आपका लाइन आएगा हाँ, आइरिस इक्वल इज इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट अंडरस्कोर, हाँ वो ही लिखा। वही लिखा ना, ठीक है, हाँ, ओके। अभी अभी तो फिर इसके x1 इक्वल बाद टू, हाँ एक्सप्रेशन रखिए, देखते भी जाइए जैसे मैं हाँ, कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद ये लाइन लिखा आपने, नेक्स्ट आइरिस डॉट ड्रॉप करके हाँ बताइए मुझे। हाँ, लिखा, x1 लिखा था सर वहाँ, x लिखना ना, x इक्वल टू आइरिस डॉट ड्रॉप। बिल्कुल, क्या लिखा आपने वो आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स लिखा, x1 लिखा, क्या लिखा? हाँ x1 ही लिखा। x1 लिखा ना, ठीक है, ओके। हाँ, ओके, नेक्स्ट आपका y जो इक्वल वेरिएबल टू आइरिस स्पीसीज, हाँ बराबर ऐसे ही लिखा ना, हाँ ठीक है। बराबर, हाँ फिर बाद उसके में बाद हमने, आप हाँ वो ही लिखा, x ट्रेन x टेस्ट y ट्रेन y टेस्ट इक्वल टू स्प्लिट x1 y, x1 छोटा x1 ना, हाँ छोटा x1 जो वहां था, हाँ हम्म, y ओके, टेस्ट y, साइज, हाँ और रैंडम वो सेट, ही है, हाँ ठीक है। तो अब आप ये कीजिए कि जो एक्स ट्रेन के पहले है कोई स्पेस नहीं है, देखिए सब मेरे हाँ एक ही वो लाइन में भी है। नहीं है, हाँ वो भी निकाल दिया मैंने। ओके, अब आपका कोड मेरा कोड अगर मैच कर रहा है तो एक्सपेक्ट का रन करना चाहिए, देयर इज नो रीजन फॉर नॉट रनिंग। चेक कर लो ध्यान से एक बार और। शिफ्ट एंटर, वो घूम ही नहीं रहा मेरा, हाँ अभी घूम रहा है। इंटरप्ट एग्जीक्यूशन, सेल एग्जीक्यूटेड सिंस लास्ट चेंज, हाँ, तो शायद आपको क्या स्पेस निकालना ना होगा। ना 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 वो हाँ इंटरप्ट एग्जीक्यूशन अगर आ गया तो आपका प्रीवियस ओल्ड डेटा वुड हैव गॉट आल्सो लॉस्ट, नो प्रॉब्लम, बट ये तो इंडिपेंडेंट सेल है, इसको वापस से रन कीजिए सेल को एक बार और। नहीं आया सर, कोड तो यही है जो आपके सामने है। हाँ नहीं आया, देख लेती हूँ सर तो बाद में, क्योंकि ठीक सेम है, कोड वैसे ही है तो आप एक शायद काम कीजिए, एग्जीक्यूशन में, हाँ आप एक काम कीजिए, अपने स्क्रीन पर मेरे स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन निकाल लीजिए, यू नो हाउ टू टेक अ प्रिंट हाँ स्क्रीन ना, हाँ प्रिंट स्क्रीन। हाँ हाँ, हाँ, निकालिए, निकालिए प्रिंट स्क्रीन। निकाला निकाला, ओके ठीक है, उसको जाके पेंट में पेस्ट करके आपके पास रिकॉर्ड में रख दीजिए। हाँ ओके, राइट, fine. So, राइट, friends, as we have almost all finished, before we wind up, let me have one more query resolved here. Bispita says giving me key error. Bispita is giving you key error, but there is maybe you have done a mistake with respect to HANA values. Can you also do the same thing, Bispita? Can you also take a screenshot of the screen? Key error एक ही जगह आ सकता है आपको कि आपने जो स्पीसीज कॉलम में स्पेसिफाई किया उसका स्पेलिंग गलत है, और कोई चीज हो ही नहीं सकती की एरर वाली। Bispita, could you take a print screen of this? Hope you could. Okay, yeah, fine. Yes, got it. I hope you got the error only and you resolved it. Fine. So, friends, we will wind up today's session at this particular point. I hope it was a good learning experience. So please punch in of how my experience today was on the chat to me. And tomorrow we will going to solve the ML problem. Okay, we're going to solve the ML problem from tomorrow. Don't worry, but then please make sure I've given you a video here which talks about negative rewarding metric and positive rewarding metric. Please make sure that you're going to the videos. Before tomorrow's work, make sure you scan the video and do the little reading part. Okay? Right. Yes. So my session. एक डाउट सर, अभी सुबह जो लेक्चर हुआ था टेस्टिंग के बारे में, तो वो सर ने क्या किया कि एक्स को जब डिफाइन किया तो वो -1 जैसे कोड लिखा था, सेमी कॉलन -1, ताकि वो सारे वेरिएबल्स ले। Okay. तो Yeah, अभी that's ये called दिस hygiene. इज बेटर आई थिंक, बिकॉज एक ही ड्रॉप करे तो बाकी सब ले लेगा, वही ना सर? But नहीं, एक्चुअली कैसा है कि both techniques are equivalent. अगर आप ये तरीका देखें, फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू जनरेट द एक्स, ओके, एंड आई गॉट लेट्स से 20 कॉलम्स एंड आई डोंट नो द कॉलम नेम्स, मुझे कॉलम के नाम नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू माय डेटा फ्रेम एंड आई विल से आई वांट टू पिक अप ऑल द रोज, बट अमंग वैसे लिखा था सुबह। हाँ, बट अमंग द कॉलम्स
to pick up all the columns except the last. Yeah. I have to pick up all the columns from start except the last. So it's going to do what? It's going to, but this technique will only work. This technique will only work if the last column really is the Is why. is a Y. Correct. But in our case, if you look at the housing price wala example, price तो बीचों बीच में आ रहा है. So there you have to go in for the drop method mechanism. हाँ. अभी और एक डाउट, अगर हमें एक्स में सारे वेरिएबल्स नहीं लेना है डेटा सेट में, जैसे अभी अगर वैल्यू 6 एट्रीब्यूट्स है, 6 वेरिएबल है और अभी हमें 3 ही लेना है, तो अभी आपने यहाँ सारे लिए इसलिए स्पीसीज को ड्रॉप कर दिया, लेकिन आई वांट टू टेक ओनली 3 वेरिएबल्स, तो जो है वो लिखना. करेक्ट. ऐसे आप you make a list of column names which you wish to pick up. Okay. Let's say A1 are my column name which I wish to pick up. I'll go here and I will specify this features underscore list separately here. अच्छा. So I'll specify that these are the columns which I wish to pick up, and I'm now going to specify this. So I'll pick up this here, features list, and that is going to be picked up. Now what we will do is we will pick up this data frame and make another data frame, let's say df1. Okay. So in the data frame df1 you have only got your features which you are interested. Let's say variables. Yeah. So let's say out of 100 columns you picked up only 2 columns which are interesting to you. 2 कॉलम आपके पास आ गए df1 में. अब वो df1 कॉलम में जो 2 कॉलम आपके पास आ गए हैं उसमें से आपको what you want to do, whether you want to split the data or whatever, then you're going to work hereafter on df1. अच्छा. Right. Right? Yeah. Right. So yeah, so my session is over here. I give the control back to the organizing committee, Rathore sir or whichever teacher is going to take up. Yeah, thank you from my side. Thank you so much, Rocky sir, for a wonderful session on regression and various collabs with hands-on session for all participants. Thank you so much, sir. We'll again meet tomorrow for Sure. most wonderful sessions. Sure, absolutely. Yeah. So we'll meet tomorrow morning, sharp at 10 a.m. Okay, for morning session, and tomorrow afternoon for Rocky sir session. Okay. Well, I once again thank you all participants, and I once again thank you our today's speaker, Mr. Rocky sir. Thank you, sir. सर कल कौन सा टॉपिक है सर? मैडम टेंशन मत लो, 15 दिन है ना आपके पास और 8 दिन है. नहीं सर, पहले ही मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेती, नहीं तो मुझे क्या एबीसी ही हो रहा है. ले आप रिवाइज क्या करो जो हो गया हो, दैट्स इट. वीडियोस है, सब कुछ है, ऑटोमेटिक इज देयर. रिवाइज क्या करो. अभी जैसे अभी सर ने बताया, पहले ही मैं देख लेती थोड़ा तो एटलीस्ट मुझे आइडिया आएगा, क्योंकि आई एम जस्ट लर्निंग एंड आई हैव एनरोल्ड फॉर कोर्स इन अदर कोर्स, तो वहाँ सब ये सब थोड़ा पढ़ाया हुआ है, इसलिए थोड़ा कनेक्ट हो ठीक है. रही हूँ. रॉकी सर आप ही बोलिए. Yeah, ma'am, take it easy, no problems, because of the fact that आपका जो नोटबुक है ना, जो नोटबुक आपके पास पहले शेयर हो जा रहा है ना, उसको भी अगर आपने theoretically भी रीड कर लिया ना, you will get an idea of what is going to be done. कर रही हूँ. अभी तो ये दो आज रात को कैसे भी कर दूंगी. ओके सर, राइट. Thank you. And all of you please fill that attendance sheet, feedback form. Rocky sir. Yes.